Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without wasting any further time, let's start today's topic. आज का टॉपिक है फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज union and its territory comes in part 1 of our constitution, and these all states which are comprising our union are written in schedule 1. Okay, see, we have 25 parts, 12 schedules, and I think 465 something articles, but the last article has been numbered as 395. These all rest are amendments to the constitution, so they have been inserted in 365(1), 361, 71, 72, these kind of things. So if we count the total number of articles, it comes out to be 465, I think. Okay, जैसे हमारी बुक होती है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, वैसे ही ये है. ओरिजिनली क्या था, तो कुछ पार्ट्स थे, कुछ स्केड्यूल्स थे और सम आर्टिकल्स थे, ठीक है. पर धीरे धीरे एज द टाइम प्रोसीड्स, द अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन प्लेस, एंड दैट्स व्हाई वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ. So in these 25 parts, 12 schedules and 465 articles, there are some provisions, there are some parts, there are some schedules, and there are some articles which are mandatory for us to remember. What are these articles? I will be discussing in next classes. Okay, these all 12 schedules are very important from our exam perspective. Some parts and some articles are important. Okay, so now we are dealing with part 1, and in part 1 we have union and its territory, which are numbered article 1 to 4. ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल्स यही हैं. So let's start in a chronological way. Article 1. Article 1 deals with the name and the type of polity India has. Okay, what is the name in our original constitution? Article 1 declares that India, that is Bharat, is union of states. Okay, I have told you in our constitution the word federal has not been used anywhere. Okay, instead of the word federation, this union has been used. Okay, so why federation is not used in Indian constitution and why this union term is used, I have told you. Let's revise it quickly. So first of all, India, from in its ancient roots only, is considered as single country. These are not independent or separate states which have signed the agreement to form one single country called as India. Unlike what is shown in US, what we see in US, there are 50 states. Okay, originally there are 12 or 16 states, I think, but in the recent view there are 50 states. So these 50 states have signed the agreement to come and make a federation of state which is called United States of America. Understood? But in particular case of India, it is not like that some parts or some provinces or some states came together, signed this particular paper,
called agreement, and then the Indian Federation came into being. It is not like that. India is a single country only. So first relevance of the union word is this. Different states didn't came together to sign an agreement to form India. And the second interpretation of this union word is states don't have the right to secede from India. Okay. इन यूएसए एवरी स्टेट हैज़ द राइट टू ससीड. वो अपना जो हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का देखा था प्लेबिसाइट और ये सब करवाएंगे रेफरेंडम, और अगर इफ़ अ स्टेट वांट्स टू ससीड फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ यूएसए दे कैन इजीली डू सो. Understood? But in India it is not possible, as India is not a federation of states, but instead it is a union of states. Okay, so these are the two significances of the word union provided in article 1, and the formal Indian name is India, that is Bharat. Understood? Actually there was a debate in Constituent Assembly that we should use India or we should Bharat or we should use Hindustan. So finally the Indian term has been instilled in the Indian Constitution, but due to the popular voting of the Bharat term also, the word Bharat also has been put beside India. So these are two formal names of India. Understood? So article 1 declares the name of the country which we are living in and the type of polity, that is union and not federation. Understood? So this was article 1 for you. Now comes article 2. See, जो भी आपकी जो टेक्निकल डेफिनेशंस है ना, you should refer to लक्ष्मीकांत or any other book. Okay, you can also refer to the original constitution. एक छोटी सी बुक आती है लॉयर्स के लिए, उसमें सारे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी की टेक्निकल टर्म्स में लिखा होता है, उसमें एक्सप्लेन नहीं होता, तो आप वो भी खरीद सकते हैं. दिस क्लास इज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी, द कंसेप्ट. अंडरस्टूड? So in article 2, what is this? Picasso drawing. This is our Union of India. Okay, this is a small state in वेस्ट एशिया, और इसने कोई भी कंट्री ने इसको क्लेम नहीं किया है. ठीक है, दिस इज अ बैरन लैंड एंड नन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैज क्लेम्ड दिस टेरिटरी ऑफ इट्स ओन. नाउ इंडिया वांटेड टू क्लेम दिस टेरिटरी, सो व्हाट शुड इंडिया डू? वहाँ इंडिया गया, अपनी आर्म फोर्सेस भेजी या कैसे भी, वहाँ तो कोई रहता नहीं है, वहाँ भेजा. अगर कोई रहता भी है वहाँ आदमी तो उनसे एग्रीमेंट कर लो, नहीं रहता तो ऑक्यूपाई कर लो. ठीक है, सो इनिशियली दिस स्टेट, not state, this land doesn't belong to India. Okay, and doesn't belong to any other country. Okay, so this is kind of new land or state which is not part of Union of India. So if India in future wants to acquire this external territory, so after procuring this territory, India will use article 2. Understood? And now by using article 2, India will legally and formally procure this territory. Okay, physical occupation has been done previously, and now the legal occupation of the territory will be done under article 2. Okay, now the legality has been formed. This state now belongs to India. Now India want to establish it as a state called Bacha Bhai. Okay, like we have states Tamil Nadu, Andhra Pradesh, all those things. So ठीक है, बहुत अच्छा नेम है, बच्चा भाई स्टेट. Okay, now this state was external to India. A territory which is external to India, India has legally acquired it, physically acquired it, and now India wants to name this territory and give it the status of a state. So now India will use article 2. So article 2 can be used in two ways.
Okay, first is acquiring, procuring the external territory and forming new state which are not part of India. ठीक है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है. आर्टिकल 2, द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इज दिस वन ओनली. अंडरस्टूड? दिस इज आर्टिकल 2 फॉर यू. मैंने पहले ही बोला है, जो भी आपको टेक्निकल लाइन समझनी है, इफ यू वांट टू डू rectification of the technical thing, what should you write in the examination, then please refer to provisions of constitution or Lakshmikant book. Okay, the language is something on these lines, that under article 2 India can establish a new state or acquire a foreign territory, I think. Coming to article 3, it is a ordinary law, बट स्पेशलिटी ऐसा डाल दिया. स्पेशलिटी क्या है इसकी? आर्टिकल 3 इज द ऑर्डिनरी लॉ विच रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन और प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट. अंडरस्टूड? ना व्हाट इज आर्टिकल 3? पहले बेसिक ही देख लेते हैं. आर्टिकल 3 ये कहता है कि जब आपको 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करना है, बांटना है, तो यू विल यूज आर्टिकल 3. ओके, जब आपको एक बड़ा स्टेट आसाम से 7 सिस्टर्स बनानी है, सबको अलग करना है, सो यू विल यूज आर्टिकल 3. व्हेन यू हैव टू मर्ज 2 or 3 स्टेट्स और मोर स्टेट्स, यू हैव टू यूज आर्टिकल 3. ओके, नाउ you can see the difference clearly in article 2 and article 3. In article 3 we are adjusting internally and not externally, which you can see here in article 2. This is external territory, okay, not internal. In article 3 we will deal with internal adjustment. This is the main word. ये आपको शायद से लक्ष्मीकांत पे नहीं दिया, तो ये internal adjustment के लिए काम आता है. With article 3 you can change the name, area, boundary of a state. Which state? Which is part of the Union of India and not external territory, unlike in article 2. Understood? Now the special provision is, it is the ordinary law, means it can be introduced in either house of the parliament. Okay, but what is the speciality? Ordinary law जो होते हैं वो सारे either house of the parliament होते हैं. Okay, so speciality क्या है इसमें? Speciality ये है कि it is the ordinary law but it requires prior approval और prior recommendation of president. अच्छा, ये जो prior recommendation of president है, ये कब देगा president? इसके पीछे भी फॉलो अप्स है. ठीक है, this is the roadmap of article 3. First, the president will seek views of the state legislature. और कौन सी स्टेट लेजिस्लेचर है जिसका हमें नाम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना है. ओके, द president will seek views of the state legislature of whose parliament intends to change the name, area, boundary. Okay, now when
he will send this notification that dear state, we want to change your name area boundary. So what are your opinions, what are your views on this? So a specific time period will be given to the state legislature to seek the opinions. Now when these views came to the president, he will give approval and the bill can be introduced in either house of the parliament. Understood? One question, but are these views are binding on the president? Ki you have to accept it. You have to order parliament to accept this recommendation or rules, and these rules has to be instilled in the final form of bill. Are these views binding? The answer is no. These views of the state legislature are more of a formality. Okay. Now यहाँ तक पहुँच गए हम. अब 2 मेंबर के चुल लगी हुई थी लेजिस्लेचर हाउस में. उन्होंने बोला कि डियर एमपीज, रेस्पेक्टेड स्पीकर, आई वांट टू सजेस्ट एन अमेंडमेंट. सो ही सजेस्टेड 10 अमेंडमेंट्स. मांगी एक की परमिशन थी और बोले उसने 10 अमेंडमेंट्स. स्पीकर साहब उस दिन मिठाई खा के आए थे. स्पीकर ने बोला भाई आज अच्छा मूड है, तुम्हारी 10 की 10 अमेंडमेंट्स मैं स्वीकार करूंगा. ओके. सारे एमपीज का भी अच्छा व्यूज था. सारे एमपीज ने बोला हम 10 के 10 ही लेंगे सारे. ठीक है. 10 के 10 अमेंडमेंट्स हैज बीन इंस्टिल्ड इन द फाइनल फॉर्म ऑफ द बिल. नाउ द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट डिडंट रिक्वायर टू seek the views of the state legislature in the modified form of bill. Understood? बार बार ये देने की जरूरत नहीं है. आपने एक बार फॉर्मेलिटी कर दी, बहुत काफ़ी है. जैसे घर में हम खाना खा रहे हैं और कोई गेस्ट आ जाए तो एक बार फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, सर आप भी खा लीजिए. तो वही चीज़ है ये बस. ठीक है. इधर हाउस पे पहुंच चुका है, आपको बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, इन केस ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, दिस होल प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यूनियन टेरिटरी केम अंडर द jurisdiction ऑफ सेंटर ओनली. ओके. सो these formality of seeking the views of the UT is not required. President alone can approve this bill, and then this bill can be, not either house of parliament, this bill can be made an amendment. Understood? And thus it can be passed by simple majority. So covering all these prospect, मैंने आपको एक कल statement बताई थी which is relevant here. I have told you in last that USA is destructible union of indestructible states. याद आ गई? तो इंडिया में क्या था बोलो? India is indestructible union of destructible states. It means Indian government has so much power in its hand that he can redraw the whole map of India, the whole internal map of India on its own will. Understood? Absorb this. Understood? अच्छा, one more point. If India want to secede, give away any territory or state of India to a foreign state, then it doesn't come under Article 2 or Article 3. Means Indian Parliament under Article 2 and under Article 3 doesn't have power to secede any state, to give away any state. जैसे कैसे अगर मैं बोलूँ तो शायद से सक्सगाम वैली है ना पाकिस्तान में, तो उन्होंने चाइना को दे दी है पाकिस्तान ने, है ना. ऊपर का जो पार्ट था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वर्ड नेम, आई थिंक सक्सगाम वैली है, तो वो उन्होंने दिया. तो इंडिया डजेंट हैव द पावर अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3 टू डू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोविजंस.
Article 4 is the simple article. It says that laws made under Article 2 or 3 or executive action done under Article 2 and 3 don't have the effect on Constitution. The actions done under Article 2 and 3 will not be considered as amendment to the Constitution. Okay. But in future, if India want to secede some Indian territory or a state of India to a foreign state, so is there any provision? Yes. SC has declared that by the Constitutional Amendment Acts, India can even secede Indian territory to a foreign state. But it requires Constitutional Amendment Act under Article 3, which requires special majority. सब पता है आपको. So achieving this is very difficult. So if the whole India is in consensus that we want to secede a particular state to a foreign state, then Parliament can enact the constitutional amendment and thus give away the particular territory to foreign state. But Article 4 says this only, that actions done under Article 2 and under Article 3 will not be considered as amendment to the Constitution. ये मैंने जो एक्स्ट्रा बताया कि सस्सीड इससे कर सकता है, ये कभी हुआ है? हंड्रेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर कौन सा था आप बताओगे? क्योंकि दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन द यूपीएससी एग्जाम, और ये इसीलिए ही इम्पोर्टेंट था कि वाया हंड्रेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट some conclaves of India has been given to Bangladesh and some conclaves in Bangladesh has been given to India. Okay, so this is more of a, I will not call it boundary dispute, because when the partition of, not partition, see, this was called West Pakistan, this was called East Pakistan, this Bangladesh, this was West Pakistan, this was East Pakistan before 1971. At the time of independence, India and Pakistan got independence on the same day. You can say that on the same day, 14-15 August. So two provinces of Pakistan has been formed. One is called West Pakistan, second is called East Pakistan. In 1971, also known as Bangladesh Liberation War, India covertly provided support to there were particular group, I don't remember the name of the group, but India supported particular group. So the Bangladesh has been liberalized in the year 1971. Now this was boundary of India and Bangladesh. So now some conclaves which belong to Bangladesh remained in India. इतना सा बांग्लादेश का एनक्लेव है, टेरिटरी है, और यहाँ पूरा इंडिया है. सो यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज. ओके, सो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ क्या? दीज पर्टिकुलर एनक्लेव्स विच आर ऑन द इंडियन सॉइल हैज बीन टेकन बाय इंडिया, एंड द सेम एरिया, almost the same area of the Indian conclaves in Bangladesh has been given to Bangladesh. Administrative obstacles solved. Understood? So अगर हमको ससीड करनी है इंडियन टेरिटरी दूसरे स्टेट्स में, तो वी विल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368. Article 4 says that actions done under Article 2 and 3 will not be taken as amendments. Okay.
Now, India got independence and declared republic at 26 Jan 1950. Now the question arises that should India be separated, bifurcated, segregated on the lines of on the lingual basis. Okay. So three commissions Dhar Commission, JVP Commission and Fazal Ali Commission has been formed. ये chronological order में ही है, पहले धार, फिर JVP, then Fazal Ali. The points which we have to remember according to our exam, from this committee's recommendation, State Reorganization Act of 1956 has been passed and the groupings. See, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना फॉर्म में, तो हमारे जो पूरे इंडिया है उसको ग्रुप्स में बांट दिया गया था, उसके स्टेट्स को ग्रुप्स में बांट दिया गया था. जैसे टेक्निकली रॉन्ग हो सकता है एग्जांपल, बट अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. हमारा जो ऊपर का एरिया, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, इनको एक ग्रुप डाल दिया. सेवन सिस्टर्स का एक ग्रुप बना दिया. मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इनको एक ग्रुप में डाल दिया. तो ABCD ऐसे 4 ग्रुप बना दिए थे. सो वाया दिस, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमेटी, 2 थिंग्स हैपन. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज़ बिन पास्ड. इसका मतलब फजल अली ने बोला था कि यस यू कैन डिवाइड इंडिया इनटू ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. पर क्या इसने, फजल अली साहब ने इसकी वकालत की थी कि वी शुड डिवाइड इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट? नो. ठीक है, ये रिजेक्ट कर दिया था कि एक लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसी का स्टेट होगा, क्योंकि ऐसे तो वी हैव सो मेनी डायलेक्ट्स इन ऑफ हिंदी ओनली. सो ऐसे तो इतने सारे बाल्कनाइजेशन हो जाएगा स्टेट्स का ना, इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा. ओके, so the formula of 1 language 1 state has been rejected, but yeah, Fazal Ali recommended that you can segregate or bifurcate states on linguistic basis. Understood? और इसी के रिकमेंडेशंस के बाद वो जो ग्रुपिंग्स मैंने बताई ABCD वो हट चुकी. उसके बाद जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, अभी नहीं, पहले तो शायद से 16-17 थे, तो उतने they came into being. Understood? Dhar and JVP Commission rejected the idea to separate India, to bifurcate India on the linguistic basis. इतना काफ़ी हमारे एग्जाम्स के लिए. Understood? So after this, I will be providing you certain slides. जैसे नाम कब कब किसके चेंज हुए, जैसे दिल्ली को NCT दिल्ली, ठीक है, और उड़ीसा को उड़ीसा, ओके, उत्तरांचल को उत्तराखंड, यूनाइटेड प्रोविंस को UP. तो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि UPSC कभी भी कुछ भी पूछ सकता है. तो हैव अ लुक ऑन दीज स्लाइड्स एंड ट्राई टू रिमेंबर इट. So friends, I hope you like to study the part 1 of our constitution. In tomorrow's lecture, we will study part 2 of our constitution, which deals with citizenship in India. So if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद.